Let's in the meantime shift focus to the other news this morning when we talk about the situation that still remains very concerning when we speak of Maharashtra. Heavy and continuous rainfall that has battered the city of Mumbai, bringing it to a standstill, where there has been waterlogging, flooding that has caused major problems with damage and disruption, and the loss of lives that has also been reported in the last 2 weeks alone. Now, a team on ground that has captured the impact of the rain as we get you the pictures that have been coming in from different parts of the city. After the fatal incident of house collapse, now the debris is being removed with the help of Mumbai Fire Brigade and NDRF. अभी क्या सरकार को या पुलिस को या सबको दिखता नहीं है क्या कितने मंजिला घर है, कितनी हाइट है, क्या है? वो कहीं ना कहीं सरकार कुछ ना कुछ अपना ये फायदा उठा के वो पास कर देती है या अनदेखा कर देती है. You can see right now behind me how the situation is. This is Vasai's Madhuban township, and over here you can see how bad situation has been. The wind is very much high. It is flowing very high. With that, rain is continuously pouring. At present, I'm reporting from the tourist-friendly Warsaw beach. You can see there is not a single police personnel over here. If the Mumbai mayor or the BMC cares so much, then when the sea levels are rising so much, the entire water that is accumulating in the city is going towards the sea. The water levels are rising. It is high tide. Strong winds are blowing. Not a single lifeguard can be seen at the beach. That time of the year in this city, the maximum city, the period that people dread. You know, every monsoon, the situation remains the same. People lose their lives, and it's not just because of heavy rainfall. Weather is something that we can be prepared for. So it's lack of preparedness, it's criminal negligence, all together that leads to massive inconvenience, and in Mumbai, the deaths of people as well. Now, barely weeks after it was inaugurated as a game-changing engineering marvel, the Mumbai-Pune Expressway's missing link, as it is being touted by the opposition, was brought to a halt by a landslide that was triggered by heavy monsoon rains. Now that the traffic has resumed after several hours on the connecting link, with the Chief Minister's office now saying that vehicular movement has been restored and the government has been doing its best, but has the first real monsoon exposed the cracks in one of the state's flagship infrastructure projects? In a breaking update, as far as what we are now learning, in this controversy that has now raised serious questions over accountability, and the same contractor, Navyuga Engineering, that now finds itself linked to two major infrastructure incidents. First is the Mumbai-Pune Expressway's missing link, what is being said, and then the Silkyara tunnel collapse. Now, with one company behind both of the mega projects, questions are now being raised over quality checks, the standards, the oversight, allegedly whether lessons have been learned from the past failures, and why was the same contractor trusted with another critical project. Now, as far as the vehicular movement that has now been restored after more than 15 hours of what has now been said of the work that has been done on this very tunnel, the landslide there, and 4 in the morning, what is being said that the pictures that seems to have been recorded in this missing link, as it is now being touted on part of the opposition there. But this is now one, what is being said as this connecting link that has been hit by a landslide within months of opening has raised several questions. So let's talk about those questions, because the work that has now been done on these two major infrastructure projects seems to have gone to the same contractor. When we speak of the Silkyara tunnel in Uttarakhand, the collapse that happened on the 23rd of November, where 41 workers were trapped for over 15 days. And the contractor, it's the Navyug Engineering Company. Then let's talk about the recent incident of Mumbai-Pune Expressway, a 7,000 crore project inaugurated
on the 1st of May 2026. It faces a landslide, waterlogging in July 2026. The contractor, again, the Navyug Engineering Company. Now, the questions that have been raised, let me quickly go across to Atul now. Atul, ट्रैफिक रुक जाता है, लैंडस्लाइड हो जाती है और एक तरीके से सवाल ये उठाए जाते हैं कि बार-बार अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो इसके पीछे कौन है? जी देखिए, फिलहाल के लिए मुंबई के लिए तो एक राहत की खबर सुबह से आई हुई है, क्योंकि बारिश बीते 3-4 घंटों से बंद है और उसकी वजह से जो लो लाइंग एरियाज है वहां पर वाटर लॉगिंग जो अमूमन हमें मंडे के दिन देखने को मिला था, वो आज उस तरीके की हालात नहीं है। लोग अपने ऑफिसेज के लिए, अपने जो है मंजिल के लिए, कामकाजी जो दिन है उसके लिए निकले हुए हैं, लेकिन ट्रेन जो सर्विसेज है वो अभी भी डिसरप्टेड है, क्योंकि वेस्टर्न लाइन के जो पालघर डिस्ट्रिक्ट के मेजर स्टेशन है, चाहे वसई विरार या नाला सोपारा, वहां पर अभी भी ट्रैक पर पानी होने की वजह से 15 to 20 मिनट्स जो लोकल सर्विसेज है वो देरी से चल रही हैं। सेंट्रल लाइन भी जो है डिसरप्टेड है, 15 to 20 मिनट्स उस पर भी जो है ट्रेनें लेट चल रही हैं। जो बदलापुर, आसनगांव, जो है उल्लासनगर, ये पास के जो ठाणे डिस्ट्रिक्ट के तो एक बार फिर से बता दें अपने दर्शकों को, अतुल बने रहिए हमारे साथ, बिकॉज व्हाट इज बीइंग सेड एज द ट्रेन मूवमेंट दैट हैज आल्सो बीन अफेक्टेड. Trains that are running around 15 to 20 minutes late, and this is now coming in from Virar to Churchgate because of water logging on the tracks. और ये जो water logging है ये बताया जा रहा है विरार, वसई और नाला सोपारा, क्योंकि जो लोकल्स है मुंबई की, अतुल, वो लाइफलाइन मानी जाती है, तो अगर वही देरी से चलेंगी मतलब लोग भी देरी से अपने ऑफिस या दफ्तर पहुंचेंगे. जी देखिए, वहाँ के लोगों के खास तौर पर वसई, विरार, नाला सोपारा, ये जो पालघर डिस्ट्रिक्ट का इलाका है, वहाँ पर लोग जो है सिर्फ रेलवे ट्रैक के पानी से नहीं, लोड शेडिंग से भी काफी ज्यादा परेशान हैं. कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं पिछले 2 दिनों से वहाँ पर जो है पावर कट चल रहा है उन इलाकों में, जिसकी वजह से लोग अपने घरों में जो रोजमर्रा के काम है वो नहीं कर पा रहे. मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है या जो है जो वाटर सप्लाई है वो डिसरप्टेड है. काफी ज्यादा उनकी जिंदगी जो है काफी मुश्किलों में आ गई है और रेलवे ट्रैक पर पानी भरने की वजह से लोग कहीं आ जा भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मुंबई से सटे पालघर डिस्ट्रिक्ट भले जो है मुंबई से लगभग 50 to 60 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, लेकिन बाई रोड अगर आप जाएंगे तो काफी ज्यादा समय लगता है, क्योंकि ह्यूज ट्रैफिक है. मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर भी वाटर लॉगिंग की वजह से, हेवी ट्रैफिक की वजह से, लेकिन हर साल सेम कहानी क्यों रिपीट पे लगातार नजर आती है? अब when it comes to the infrastructure, the rivers, richest civic body and the preparedness on the ground that seems to have been exposed by the first rains of the delayed monsoon that the city of Mumbai and the state of Maharashtra has witnessed. धन्यवाद आपका अतुल हमारे साथ जुड़ने के लिए. Let's in the meantime speak of the Union Territory of Jammu and Kashmir and Doda district. What we are learning of a cloudburst that has now triggered flash floods in the Thatri area. As the flash floods and the landslides that have caused extensive damage, with around 8 to 10 houses that have reportedly suffered damages, including shops as well. Several vehicles that have also been hit as the debris swept through the parts of the town, and this incident that has disrupted connectivity with the National Highway 244 being closed because of the landslide and the debris. Now, what is being coming across is the restoration work that is underway to clear the road and to restore normalcy of the traffic. Authorities are assessing the damage while the local teams have been engaged in relief and restoration operations in the affected areas, and there is no immediate reports of any casualties so far, but the officials continue to monitor the situation very, very closely. So as far as the hilly regions are also concerned, that seems to be bearing the brunt of the monsoons there, and often at this period and this point in time we're looking at landslides that are often reported, cloudbursts that are also reported, and these are one of the regions there which are susceptible of cloudbursts and also flash floods. Earlier, now it is being reported that as of now, there is no casualty or injuries that have been reported as of now. Let's connect with Ankit on this. Ankit, तस्वीरें आ रही है बादल फटने की जो, और वहां पे जो अमूमन जहां पर इलाका है वहां पे बताया जा रहा है कि अक्सर इस तरह के हालात बन जाते हैं हर साल जब बारिशें होती हैं. इस घटना के बारे में बताइए जो डोडा में हुआ है. ये डोडा का ठाठरी इलाका है जहां पे ये घटना पेश आई है, फ्लैश फ्लड, और जो यहाँ पे लैंडस्लाइड है उसके कारण तकरीबन 8 घरों को डैमेज पहुंचा है. कई
जो दुकानें हैं उनको भी यहाँ पर डैमेज पहुंचा है। ये तस्वीरें साफ तौर पे दिखाती है कि किस तरीके से भारी नुकसान जो है लोगों को हुआ है। गनीमत ये रही है कि जानी नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन माली नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। ये डोडा, ठाठरी और किश्तवाड़ को जोड़ने वाला रास्ता है, जहां पर ठाठरी इलाके में जो फ्लैश फ्लड है वो यहाँ पर पेश आई है। वहीं आपको बता दें कि प्रशासन जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाता हुआ नजर आ रहा है। बड़े बड़े बोल्डर जो है वो सड़कों पर आ चुके हैं और ऐसे में लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो वहां पर चलाया जा रहा है। तो सफाई का जो काम है, जो क्लियरिंग आउट ऑपरेशन है, वो बताया जा रहा है, बिकॉज वी कैन सी द काइंड ऑफ डैमेज दैट सीम्स टू हैव बीन इन्फ्लिक्टेड ऑन सेवरल होम्स, शॉप एंड ऑन द व्हीकल्स दैट आल्सो वर इन द पाथ व्हेन द क्लाउड बर्स्ट हैज बीन रिपोर्टेड इन डोडा। थैंक यू वेरी मच अंकित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विद दैट वी हेड इनटू अ वेरी शॉर्ट